Now let's talk about solubility of group 2 compounds in water. तो सबसे पहले अगर ऑक्साइड्स की बात करें तो बेरिलियम ऑक्साइड is insoluble in water whereas it is amphoteric in nature as well. ये नेचर में एम्फोटेरिक है, बाकी सारी जो ऑक्साइड्स हैं वो नेचर में हमारे पास बेसिक हैं, लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम तीनों की ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल हैं, दे डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। लेकिन चूंकि बेरिलियम की ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो ये एसिड और बेस दोनों में डिज़ोल्व हो जाती है। इसी तरह मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्साइड्स बेसिक हैं तो ये एसिड में डिज़ोल्व हो जाएंगी। अब वाटर की अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो स्ट्रॉन्शियम पर ऑक्साइड भी वाटर में डिज़ोल्व होती है और बेरियम पर ऑक्साइड भी वाटर में डिज़ोल्व होती है, एंड दे गिव कॉरिस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स व्हेन दे डिज़ोल्व इन वाटर. So this is the trend of solubility of oxides of group 2 in water. Now talking about solubility of hydroxides of group 2, तो सबसे पहले beryllium hydroxide is insoluble in water. Magnesium hydroxide is sparingly soluble in water. Then calcium hydroxide is more soluble and strontium and barium hydroxides are completely soluble in water. तो हमारे पास solubility का ट्रेंड ये है कि down the group solubility of hydroxides increases. अगर हम सल्फेट्स की solubility के ट्रेंड की बात करें तो down the group सल्फेट्स की solubility opposite order follow करती है. The solubility of sulfates decreases down the group. Now beryllium and magnesium sulfates, they are soluble in water. Calcium sulfate is sparingly soluble, बहुत कम डिज़ोल्व होता है वाटर में, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि स्ट्रॉन्शियम और बेरियम सल्फेट्स आर insoluble in water. Now here one interesting fact is about calcium sulfate, which normally exists as CaSO4.2H2O. So it normally exists in the form of this compound which is called gypsum. Now when gypsum is heated above 100 degree centigrade, ये अपना water of crystallization lose कर जाता है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करने की वजह से इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ न्यू कंपाउंड जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक मॉलिक्यूल रह जाता है. इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल. Talking about solubility of carbonates, we usually render the carbonates of group 2 insoluble. इनको हम तकरीबन insoluble में लेते हैं. अगर पहले दो की बात करें तो ये बहुत ही slightly यानी sparingly soluble हैं, जबकि बाकी नीचे वाले तीनों ये completely water में insoluble हैं. सो अगर हम डाउन द ग्रुप ट्रेंड की बात करें तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास डिक्रीज करती है. नाउ हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कि डाउन द ग्रुप ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, जबकि सल्फेट्स और कार्बोनेट्स की solubility down the group decrease करती है. Now why are there opposite trends in solubility? So keep in mind there are two things that affect the solubility. First is hydration energy and second is lattice energy. Now lattice energy क्या चीज़ है? जब आपके पास एक आयनिक कंपाउंड आयंस की फॉर्म में है तो ये सॉलिड फॉर्म में डिफरेंट चार्जेस के आयंस एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड हैं. अब अगर इसको किसी सॉल्वेंट ने डिज़ोल्व करना है तो उसने इन अट्रैक्शंस को ब्रेक करना है, तो इट हैज़ टू ओवरकम लैटिस एनर्जी. तो लैटिस एनर्जी क्या चीज़ है? ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करके आयंस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है.
جبکہ ہائیڈریشن انرجی اس کی اپوزٹ ہے. جب ایک سبسٹینس بریک ہو کے آئنز میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو سولونٹ کے مالیکیولز ہیں جو کہ یوزلی واٹر ہی ہوتا ہے وہ اس آئنز کو کیا کرتے ہیں سراؤنڈ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹیمپرری اٹریکشنز کریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے انرجی ریلیز ہوتی ہے اور اس انرجی کو ہم کہتے ہیں ہائیڈریشن انرجی. سو لیٹس انرجی کمپاؤنڈ کو ڈیزولو کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے اور ہائیڈریشن انرجی کمپاؤنڈ ڈیزولو ہونے کے بعد ریلیز ہوتی ہے. اب ان دونوں انرجیز کا کمپیریزن یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آیا ایک کمپاؤنڈ سولوبل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اگر لیٹس انرجی از مور دین ہائیڈریشن انرجی یوزلی، تو لیٹس انرجی جب ہائیڈریشن انرجی سے زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ کمپاؤنڈ کو توڑنے کے لیے زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہے جبکہ ریلیز جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو یوزلی کمپاؤنڈز کیا ہوتے ہیں سچ کیسز میں انسولوبل ہوتے ہیں. اور جب ہمارے پاس ہائیڈریشن انرجی از گریٹر دین لیٹس انرجی تو ہمارے پاس کمپاؤنڈ کو بریک کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ کمپاؤنڈ کی ہائیڈریشن زیادہ ہوتی ہے تو انرجی ریلیز ہو جاتی ہے، جتنی چاہیے ہوتی ہے اس سے زیادہ ریلیز ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے کمپاؤنڈ زیادہ تر سولوبل ہوتے ہیں. تو یہ جو آکسائڈز اور ہائیڈرو آکسائڈز اور سلفیٹس اور کاربونیٹس کی سولوبلٹی کی ٹرینڈز میں ڈفرینس ہے، دیٹ از ڈیو ٹو ڈفرینس ان لیٹس انرجی اینڈ ہائیڈریشن انرجی.